Brij Mohan Srivastava also joins us, National General Secretary of the NCP, Ajit Pawar. Mr. Srivastava, does this now settle the debate over the nephew and uncle tussle? Who has the real NCP? Now Ajit Pawar can go out and claim NCP is his. Actually, no need to claim now, because the Election Commission of India already recognized us as a Nationalist Congress party headed by Ajit Pawar ji and headed by the working president Praful Patel. So it's very loud and clear. But no doubt, this time the peoples have given us mandate, and they have clearly announced that the real NCP is run by the Ajit Dada Pawar. And this election has also given a clear-cut mandate to the Mahayuti leadership that work for Maharashtra and keep all promises, whatever we have done with the peoples, should be work for them to get the result of those promises. And on behalf of through your channel, I want to assure the voter of Maharashtra that whatever they have given us, we are very thankful to them. And humbly we want to pay the respect to the voters that they have recognized our leadership for serving the people of Maharashtra. Srivastava ji, let me ask you this as well. Now, of course, there will be all talks about a government formation. Ajit Dada Pawar always wanted to become the chief minister, still harboring that dream, but has been the perpetual deputy chief minister of Maharashtra. So, chhati baar bhi are we going to see him as the deputy chief minister? Because with these numbers, the bargaining power of both the Shinde Sena and Mr. Ajit Pawar is considerably less with the BJP. Unke khud ke paas 127-128 विधायक हैं. So your bargaining power is less. Does this mean that Ajit Pawar will settle to a comfortable deputy chief minister, sir, in the new government formation? Actually, I am not agree with his word bargaining. There is no bargaining. Actually, we are the united force as a Mahayuti party. So we do not bargain each other. Our leadership will decide the total. All our MLAs will decide. They will sit together, and the parliamentary board of all the parties will sit together, and they will decide who is the right person for this time for Maharashtra. Because the selection of chief minister doesn't it is not limited to the number of MLAs. It's the leadership also minutely analyze the political need of the state also. So, श्रीवास्तव साहब, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा. इस रिजल्ट के बाद क्या अजीत पवार जी कोशिश करेंगे शरद पवार जी भी साथ में आ जाएं? उनके लिए अभी भी कुछ रास्ते खुले हुए हैं, या फिर उनके जो एमएलएज हैं 12-14 जो एमएलए हैं उनको तोड़कर अपने साथ लेके आने की कोशिश, या उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, उनके लिए कम से कम दरवाजा खुला हुआ है अगर शरद पवार जी की पार्टी से कुछ एमएलएज आपकी तरफ आना चाहें तो? देखिए, मैं एनडीए और महायुति की ओर से एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं. कोई भी व्यक्ति जो महाराष्ट्र के विकास के लिए महाराष्ट्र की सरकार के साथ या महायुति की सरकार के साथ काम करना चाहता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का हम लोग स्वागत भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे. क्योंकि ये जो जीत हुई है, ये जीत निश्चित रूप से महायुति के नेतृत्व की हुई है, लेकिन हमारा कमिटमेंट पूरे महाराष्ट्र की जनता के लिए है. और इतने बड़े विशाल प्रदेश के लिए हम सब लोगों को मिलजुल कर जब तक हम काम नहीं करेंगे, तब तक हम महाराष्ट्र को देश के सबसे बेहतरीन राज्यों में से एक नहीं बना पाएंगे. इसको हम लोग जानते हैं. तो अगर कोई भी साथ देना चाहता है, कोई भी काम करना चाहता है हमारे पार्टी प्रोग्राम को लेकर, जो सरकार की नीतियां उनके लिए अगर कोई भी समर्थन देगा, तो हम लोग निश्चित रूप से उसको स्वीकार करेंगे.